Very good morning to all of you. Today we will discuss statutory updates. First, we will discuss for May 2026. Then we will go to the Finance Act amendment just to recap. And if time permit, then we will also go to the statutory updates for May 25 or May 25, so that you will have the quick revision as well. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टैच्यूटरी अपडेट फॉर May 26 से. All amendment made by the Finance Act 2025 are applicable for May 2026. The subject matter of the part 1 GST of September edition of the study material is based on the provision of the CGST IGST as per the Finance Act 24 and Finance Act 24 दो बार पास हुआ था, including the significant notification circular issued till 30th April 2025. तो हमने जो भी रीड किया, जो भी डिस्कस किया, वो 30th अप्रैल तक का था. ठीक है. The significant notification circular issued between 1st May to 31st October are given in this statutory updates. Amendment made by the Finance Act in the CGST IGST are effective from the date notified subsequently. Therefore, those amendments made which become effective till 31st October are applicable. So, as all the amendment given at the end of the relevant chapter have become effective, students are advised to refer the same for May 27 examinations. संजय, कब एग्जाम दे रहे हैं आप? In which attempt you are giving the exam? In which attempt you are giving the exam? May 26 only. ठीक. The content discussed in the part 2 that we are leaving GST. Charge of the GST. Amendment in the list of notified services on which tax will be paid by the ECO. Can you tell me, Sanjay? First, you tell me what are the services are notified in this category. Which category they are going to refer it? कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं ये लोग? Any guess? In which category they are talking about? कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं वो लोग? See, they are talking about the 9 subsection 5 of the CGST Act, जिसमें कौन कौन सी सर्विसेज नोटिफाइड आज तक, एज ऑफ नाउ, लाइक रेंटिंग of motor vehicle, cab through e-commerce operator like Ola, Uber. Then hotel, absolutely correct. Then restaurant, correct. So in this, they have added one more category. What is the category? Let's see. The government, on the recommendation of the council, notified the specified category of the services, the tax on which ECO will pay the tax if such services are supplied through it. Such services are given in the 9 subsection 5 notification 17 by 2017 dated 28 June was amended. So एक बार बात कर लेते हैं. Okay, can you tell me if the services of the transportation of passenger by radio taxi through e-commerce operator, then when this service, transportation service,
will not be under 95. कब ये सर्विस अंडर 95 नहीं होगी? सप्लायर विल पे द टैक्स डायरेक्टली अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, और अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है और ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से दी जा रही है, देन ऑल्सो इट विल बी under forward charge basis, not through ECO. Absolutely correct, Geet. That if e-commerce operator is a company, and Sanjay, you are also correct, that service by way of the transportation of passenger by omnibus. So two condition, one is omnibus होना चाहिए, second supplier company होना चाहिए. Service by way of the providing accommodation in the hotel, in guest house, club, campus set, by whatever name called. ठीक है. Then housekeeping such as plumbing, carpenting, and service of the restaurant other than services supplied by the restaurant, eating joint, etc. And this is the new category, service by way of the local delivery agent, where the person supplying the service through ECU is liable for registration under section, service by way of the local delivery. It means like, we can give the example, any example of the local delivery through ECU, any example of the local delivery through ECU. Correct. Porter. Nowadays we are looking into the day-to-day local delivery through porter, service by the local delivery, except it means if the supplier is registered in the GST, in that case, if the supplier is registered in the GST, in that case, e-commerce operator will pay the tax or will not pay the tax? Will pay the tax or will not pay the tax? If the supplier is registered and making the supply through, or making the delivery through local delivery through ECO, will the ECO be liable to pay the tax or not liable to pay the tax? Obviously not liable, because it is written except. Okay. This is effective from 22nd September 2025, so it is applicable. When you are appearing in the exam, May 26, आप कब एग्जाम दे रहे हैं? ठीक है. Now we are talking about exemption from GST. Now, if local delivery has been added in the 95 list, corresponding amendment has been made in serial number 18. Service by way of the transportation of goods by road except the GTA courier company, inland waterway. We all know that was the existing. Nothing explanation has been added. Nothing contained in this entry shall apply to local delivery provided by an ECO, and local delivery service provided through an ECO. Nothing contained in this entry shall apply means, what does it mean? What does it mean? Nothing contained in this entry shall apply to, इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये एग्जेम्पशन एप्लीकेबल होगी अगर कोई लोकल डिलीवरी सर्विस की जाती है बाई कॉमर्स ऑपरेटर? आंसर इज, इस लाइन का मतलब है नथिंग कंटेंट इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू, इसका मतलब क्या हुआ? द अबव एग्जेम्पशन विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दिस बिलो केसेस. फर्स्ट, लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ECO, और दूसरा लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू एन ECO. तो बोथ आर नॉट exempted. New exemption introduced, 36C and 36D. Services of the life insurance business provided by an insurer to the insured.
where the insured is not a group. For the removal of the doubt, it is clarified that this exemption shall apply to a contract of insurance where the insured is individual or an individual and family of the said individual. For the purpose of the above, family shall include all individual insured as family in the contract of insurance. इसका मतलब कौन सी सर्विस लाइफ इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट नहीं होगी, जैसे ग्रुप कंपनी को दी जाती है. Like if we are working in some organization and they've taken for all the employee, in that case, it will not be exempted. Service of the health insurance business provided by an insurer to the insured, where the insured is not a group. Same, ऊपर किसकी बात हो रही थी? लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस. यहां पर अब हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, where the insured is not a group, and same this exemption shall apply to the contract of insurance where the insured is an individual or an individual and family. And family का मतलब क्या है? जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए नाम एज ए फैमिली. थर्ड, reinsurance of the insurance service is specified in 36C or 36D. Correct. Now, amendment in the existing definition has been substituted in the para 2. ZE. GTA means any person who provides service in relation to transportation of goods by road and issue the consignment note by whatever name called. GTA का मतलब क्या है? Who provides service in relation to transportation of goods by road and issue the consignment note by whatever name called. ये सर्विस, ये GTA की डेफिनेशन थी. अब क्या कर दिया? GTA means any person who provides the service in relation to transportation of goods by road, issue the consignment note by whatever name called, but does not include an ECO by whom the service of the local delivery are provided and an ECO through whom the service of the local delivery are provided. मैं एक बार रिपीट करता हूं. An ECO by whom the service of the local delivery are provided. तो उसको हम GTA नहीं कह सकते. अगर ECO प्रोवाइड कर रहा है, it is not a GTA. And same, if an ECO through whom the service of the local delivery are provided is not an GTA, like porter. New definition introduced. Sorry. ZFB. For the purpose of the 36C and 36D in above, group means group of the person who join together with a common purpose or for engaging in a common economic activity other than availing insurance, and include employer-employee group, where an employer-employee relationship exists between the master group policyholder and the member of the group in accordance with applicable laws, or non-employer-employee groups where the clearly evident relationship exists between the master group or group policy holder and the member for service other than insurance. Health insurance business means the effecting of contract which provide for sickness benefit or medical or surgical or hospital expenditure benefit, whether inpatient or outpatient, travel cover and personal accident cover. Parallel amendment in exemption from IGST to interstate supply of the service has been carried out by amending notification number 9 by 2017. Value of the supply. Just quickly tell me what was the amendment in the 9 subsection 5? 9 subsection 5 में क्या amendment हुआ था? 9 subsection 5 की लिस्ट में क्या amendment हुआ था?
करेक्ट। अगर लोकल डिलीवरी सर्विसेज थ्रू ईसीओ प्रोवाइड की जाती है, इन दैट केस द ईसीओ वुड बी लाइबल टू पे टैक्स एक्सेप्ट व्हेन सप्लायर इज रजिस्टर्ड। ठीक है। नाउ एविडेंस ऑफ compliance of condition is not required anymore। कंडीशन क्या है 15(3)(b)(2 की? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ 15(3)(b)(2 और है क्या ये 15(3)(b)(2? एनी आइडिया? 15(3)(b)(2 था क्या? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। 15(3) बात किसकी करता है? 15(3) बात करता है कि जब मैं डिस्काउंट दूंगा, व्हेन आई विल गिव द डिस्काउंट, व्हेन इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू। क्लॉज ए टॉक्स अबाउट डिस्काउंट गिवन ऑन द फेस ऑफ द इनवॉइस। जब मैं आपको कोई सेल कर रहा हूं कुछ आइटम और फेस पर मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, तो डिस्काउंट विल बी एक्सक्लूडेड, दैट इज क्लियर। बट क्लॉज बी बात करता था सप्लाई ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है एंड देन आई एम गिविंग द डिस्काउंट। इन दैट केस when the discount will not be included, then there will be 3 points कि it should be linked to the relevant invoices, it should be linked to the relevant invoices, there has to be an agreement, and third condition क्या थी कि ITC has been reversed by the recipient। So for that there was a circular कि क्योंकि आज की तारीख में जो जीएसटी पोर्टल है that does not give the evidence कि whether recipient has reversed the ITC or not। Without reversing the ITC, the supplier is reducing the liability. But that is not the intention of the 15(3)(b)(2). So that therefore they were giving they have given the circular and they are talking that kindly obtain the CA certificate, and they have added the value of the 5 lakh concept. Correct. Agreed before the supply. Absolutely correct. Correct, Sanjay and Git. C. Post-supply discount that are given after the supply is made are allowed as deduction if the following two conditions are satisfied. We have discussed earlier in case where the amount of the tax involved in the discount does not exceed 5 lakh, then supply need to procure an undertaking from the recipient. अगर ये amount 5 lakh से exceed कर जाता है, in that case, he should obtain the certificate from CA or CWA certifying that recipient has reversed the ITC. ये requirement थी circular 212 में, ठीक है. It has been clarified above procedure prescribed by circular 212 for providing evidence shall not be required anymore. 253 ने कहा अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है ये मालूम नहीं है, बट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैल्यू ऑफ द सप्लाई इन केस ऑफ द लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग erstwhile rule 31 capital A provided as under supply of the lottery by organizing state. Organizing state means the state government which conduct the lottery either in its own territory or sell its ticket in the territory of any other state. Higher of the two, 100 divided by 128 of the face value or 100 divided by 128 of the price as notified in the official gazette. Now they are saying 31 capital A subsection 2 is saying 140। इसका मतलब लॉटरी पर कितना टिकट कितना परसेंटेज हो गया 140%, 40% हाईएस्ट टैक्स रेट। दिस रेट विल बी नोटिफाइड फ्रॉम बाय सितंबर। दिस अमेंडमेंट नॉट रेट, मतलब अमेंडमेंट तो रेट में हुआ है। Classification on the various doubt relating to treatment of the secondary or post supply discount under GST. ये clarification था that we will discuss in detail. CBSE has clarified whether the full ITC is available to the recipient when the
into the recipient of the supply when the recipient make discounted payment to the supplier of the goods on account of the financial or commercial credit note issued by the said supplier. Very nice circular, I am saying. In practically, it has resolved or solved a lot of problem and given a lot of clarity. Question क्या है? Whether the full ITC is available to the recipient when the recipient make discounted payment to the supplier. Example क्या है? मैंने आपको 100 रुपए में माल सेल किया. Let's say I have sold the goods in 23-24. ठीक है. Now you are not making the payment and I'm giving the discount of 20%. Assume that time limit to issue the credit note has been expired. Assume anything, assume there is no agreement. So I have given the discount. Can I issue the GST credit note? Can I issue the GST credit note? Answer is no. I can't issue the GST credit note. Then I will issue the financial credit note. Once I will issue the financial credit note, then there may be the possibility that you will treat this as an income. 20 रुपए आप अपने क्या बताओगे? प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम ट्रेड करोगे. Whenever the department come for scrutiny, there is a high probability that this 20 rupees they are considering as a taxable income. Point number one. Or if they found your ledger, if they scrutinize your ledger of me in your books, they will say that you have made that 20 rupees ka less payment. You need to reverse the ITC. Three possibility I am saying. They are just looking your vouchers, and out of that voucher they found one credit note. Then they are always saying that if there is a credit note, you need to reverse the ITC, whether it is GST credit note or financial credit note. So मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए. तीनों पॉसिबिलिटी में रिवर्सल ऑफ आईटीसी या पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी की बात की जाती थी फॉर द रिसिपिएंट ऑफ क्रेडिट नोट. कौन सा क्रेडिट नोट? फाइनेंशियल क्रेडिट नोट. Whether I being a supplier has reduced the liability because of the financial credit note? Just give me answer. Whether I being a supplier has reduced the liability? Answer is no. I have not reduced the liability. It means on which amount I have paid the taxes? On which amount I have paid the taxes? I have paid the taxes on complete 100 rupees, sir. Then why you being a recipient required to reverse the ITC? Now they have clarified. 16.1 says that it should be in relation to business. They have linked to the circular 92 that supplier of the goods can issue the financial or commercial credit note and he will not be eligible to reduce his original tax liability as the transaction value is not allowed to be reduced by financial or commercial credit note. Accordingly, the tax charge from the recipient would also not get reduced. Thus, it is clarified that recipient will not be required to reverse the ITC attributable to the discount provided on the basis of the financial or commercial credit note issued by the supplier, as there is no reduction, and accordingly corresponding tax liability would also get reduced. As there is no reduction in the original value, and accordingly the corresponding tax liability would also not get reduced, obviously. तो उन्होंने क्या किया, ये जो सर्कुलर था, this new circular, what is the number of the circular? You are not required to remember, but just 251. ठीक है. 251 ने 92 के साथ लिंकिंग करके ये कह दिया कि जब लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं कर रहा तो आईटीसी रिड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. क्लियर? नाउ what is the new tax rate on the lottery? What is the new tax rate in the lottery? When, okay, correct.
इट्स 40%। संजय, संजय क्या रेट है लॉटरी का? करेक्ट बेटा। अब मुझे बताओ कि कौन सी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जीएसटी में एग्जेम्प्ट नहीं है? विच लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट एग्जेम्प्टेड इन द जीएसटी? If recipient is group of, correct. If it is other than individuals or family, ठीक है। और जीटीए की डेफिनेशन में क्या चीज अमेंडमेंट हुआ? What was the main crux of the amendment in the GTA definition? What was the main crux of the amendment in the GTA definition? Crux बताइएगा। What was the exact language? I am not required. Crux क्या था उसका? What was the main crux of that amendment? What was the main crux of that amendment? जीटी की डेफिनेशन में। ओके, करेक्ट। ये बात तो ठीक है। संजय, अब एक लाइन तो करेक्ट है, सेकंड इसका मतलब क्या हुआ? करेक्ट। सो अगर लोकल डिलीवरी बाई या थ्रू ईसीओ है, दैट विल नॉट बी द जीटीए। लोकल डिलीवरी बाई या थ्रू ईसीओ है, दैट विल नॉट बी द जीटीए। करेक्ट, ये हुआ था ना। और जीटीए की एग्जेम्पशन में, सो सीरियल नंबर 18 की बात कर रहा हूं, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इज एग्जेम्प्टेड एक्सेप्ट जीटीए। वो एग्जेम्पशन किसको एप्लीकेबल नहीं है? वो एग्जेम्पशंस किसको एप्लीकेबल नहीं है? सेम वही बात कि दिस एग्जेम्पशन विल नॉट बी एक्सटेंडेड टू द सेम। वही कौन? ये एग्जेम्पशन किसको अवेलेबल नहीं है? दिस एग्जेम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल टू whom? करेक्ट, लोकल डिलीवरी बाय ईसीयू और थ्रू ईसीयू। करेक्ट, लोकल डिलीवरी बाय ईसीयू या थ्रू ईसीयू। Whether the post sale discount offered by the manufacturer to its dealer distributor would be treated as consideration paid by the manufacturer for the dealers or supply the same goods to the end customer as a monetary value of the inducement to the supply the goods manufactured by him to the end customer। एक बार वापस क्वेश्चन रीड करते हैं। पोस्ट सेल डिस्काउंट जो मैन्युफैक्चरर अपने डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है, would it be treated as consideration paid by the manufacturer for the dealer's supply of the same goods to the end customer as a monetary value for inducement to the supply the goods manufactured by him to the end customer? My God, nice clarification. Now try to understand why this clarification is required. पहले हम इसका जो आंसर दिया था वो रीड कर लेते, and then I will explain in my own language. 2 subsection 31 of the CGST Act define the consideration as to include the monetary value of any act for the inducement of the supply, whether by the recipient or by any other person. Point to be noted, by any other person। ठीक है। In case when there is no agreement between the manufacturer and the end customer, they are two independent sale transaction. One from the manufacturer to the dealer and other from the dealer to the end customer. The essence of the matter is that in a contract of sale, the sale is completed on the transfer of the title to the goods to the buyer. Once this happens, the buyer becomes the owner and the seller has no vested right. The dealer takes ownership of the goods purchased from the manufacturer and subsequently sell to the end customer. The transaction between manufacturer to the dealer operate on principal to principal basis. These discounts are simply given for competitive pricing to push sales
and merely reduce the sale price and are not linked to any independent activity rendered to the manufacturer. Okay. Therefore, it is clarified that such discount cannot be included in the consideration as the monetary value of the inducement of the further supply of these goods. उसके बाद उन्होंने कहा however some agreement अगर है तो बात अलग है. In case where the manufacturer have some agreement with the end customer to supply the goods at a discounted price, the manufacturer may issue commercial or financial credit note to the dealer, enabling such dealer to provide the goods at the agreed discounted rate. Therefore, it is clarified such post-sale discount given by the manufacturer to the dealer for supplying the goods to the end customer at a discounted rate should be included in the overall consideration as it is inducement towards the supply of the goods by the dealer to the end customer. इस चीज को हम समझते हैं. मुझे इसके लिए एक मिनट. नॉर्मली जीएसटी में जब भी क्लैरिफिकेशन आता है, नॉर्मली आई एम सेइंग इट इज नॉट ऑलवेज, बट it has been observed that whenever they have given the clarification now, it means it was the normal problem in the trade bodies. Problem means मतलब उनके लिए कुछ नोटिस या कुछ इश्यू हुए होंगे and therefore they are giving the clarification. मुझे एक बार वैल्यू ऑफ द सप्लाई चैप्टर में जाना होगा. ठीक है. यहां सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 की बात करता हूं मैं सबसे पहले, और सेकंड लास्ट क्लॉज, सॉरी लास्ट क्लॉज. बस इसको ध्यान रखना. ये क्या कहता है कि सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट सब्सिडी. ठीक है. क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी कि सपोज मैन्युफैक्चरर है, इसने माल बेचा डीलर को. ठीक है. लेट्स से 100 रुपीज में, और डीलर ने माल बेचा रिटेलर को लेट्स से 80 रुपीज में. बिकॉज ऑफ एनी रीजन उस प्रोडक्ट की वारंटी, एक्सपायरी, रिटर्न सब कुछ खत्म हो चुका था बिकॉज ऑफ एनी रीजन, या फिर इसका फर्दर जब सेल करेगा और अगर क्वांटिटी अचीव कर लेगा तो उसे कुछ डिस्काउंट मिलेगा. लेट्स से बाय दिस ही हैज अचीव द 20 करोड़ का टारगेट, एंड बाय दिस मैन्युफैक्चरर हैज गिवन द डिस्काउंट टू द डीलर 30 रुपीज पर पीस. अब देखिए इस क्लैरिफिकेशन ने क्या कहा और इसके पहले क्या प्रॉब्लम थी. There is a high possibility when the scrutiny come on the dealer, then it may be that this 30 rupees would be added in the value and the tax liability would be calculated on 110. Why, sir? See, he is selling at 80 rupees. What is the original price? 100 rupees. In the normal circumstances, no one will make the sale at loss. Correct? So the government may try to prove you are making the sale this 80 because you are getting rupees 30. So it is nothing but the subsidy linked to the price. And second possibility they are saying that this manufacturer is giving to the dealer rupees 30 and dealer is getting
from retailer rupees 80. So what is the definition of consideration? The definition of the consideration says from recipient or from any other party. तो मतलब डीलर को कितना कमीशन कितना रिसीव हो रहा है कंसिडरेशन 80 plus rupees 30 from any other person. So the liability to pay the GST on the dealer is rupees 1110. And now they've clarified that this 30 rupees is being given to the dealer is not anyhow linked to the consideration. It cannot be treated as a consideration. Is that clear? Any doubt? Whether the post-sale discount extended by the manufacturer to the dealer, can it be treated as a consideration in lieu of the activity performed to promote the sale of the goods? हाँ, पोस्ट सेल डिस्काउंट कंटिन्यू रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इवन दो द मैन्युफैक्चरर हैज इश्यूड द फाइनेंशियल या कॉमर्शियल क्रेडिट नोट, स्टिल द recipient is told to reverse the ITC or pay the GST, even if the main manufacturer has not reduced the liability. Whether dealer receives such a discount, when dealer receives such a discount, they may engage in the promotional activity to boost the sale. However, these activity ultimately enhance the sale of the goods that dealer themselves own, thereby increasing their own revenue. In this context, the discount merely reduces the sale price and is not linked to any independent service rendered to the manufacturer. जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि 30 रुपए का उसको डिस्काउंट मिल रहा है या मिलने की पॉसिबिलिटी है बाय विच इज रिड्यूस द सेल. कैन दिस 30 बी ट्रीटेड एज द सर्विस provided by the dealer to the manufacturer? That has been clarified. It is clarified that post-sale discount offered by the manufacturer to the dealer in such case shall not be treated as consideration. However, the GST would be leviable in case when the dealer undertake the specific sale promotion activities such as advertising campaign, co-branding, customized service, special sales drive, exhibition agreement, or customer support service, etc., only when such services are explicitly stated in the agreement with a clear defined consideration payable for that supply. अच्छा हुआ ये बात लिख दी, नहीं तो आजकल ये मुझे बताइए एडवर्टाइजमेंट कौन नहीं करता? Everyone will do the advertisement, right? Branding, special sale drive, everyone will do to enhance the sales. But these should be written along with key that there will be the consideration of this much of the amount. In such case, the dealer provide the distinct service and accordingly GST would be chargeable. ठीक है? Is that clear? ठीक है ना? ITC. Input service distributor. Now we have already discussed, but let me again tell that 39(1)(a, rule 39(1)(a)
सी, हम यहाँ पे किसकी बात करें? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहे हैं। और 39(1)(a) के कारण क्या हुआ? जो आरसीएम का ट्रांजेक्शन है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, दैट हैज बीन स्पेसिफाइड। बट बिफोर रीडिंग, लेट मी आस्क, इफ एन आईएसडी, let's say ISD is located in Maharashtra. ठीक है, ISD is located in Maharashtra and he is providing the service to the, let's say, Delhi, Karnataka and Rajasthan. This time ISD has taken the legal service from advocate. Will the RCM be applicable? अगर लीगल सर्विस फ्रॉम एडवोकेट है तो आरसीएम लगेगा नहीं लगेगा? जस्ट 1 minute. Will the RCM be applicable or not? Just give me the answer. Who will pay the RCM? In this case, who will pay the RCM? So ISD will pay and then he will distribute, isn't it? Or something different? ISD will pay and then he will distribute, right? Now the new problem. What was the new problem? What is the GST form which ISD will file? What is the return? जो ये रिटर्न फाइल करेगा वो कौन सा है? R6, करेक्ट। प्रॉब्लम ये जीएसटी R6 में आरसीएम पे करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आरसीएम पे करने का ऑप्शन ही नहीं है। Like in the GST R3B, there is a separate column that is 3.1.D. Can put the liability of RCM, but 6 में है ही नहीं. So therefore, they have introduced the Rule 39(1)(a), Rule 54(1)(a), and corresponding to the amendment in the definition. They are saying, where is ISD? Maharashtra. Take regular registration in Maharashtra. Take regular registration in Maharashtra. Okay. Then this legal advocate will raise the invoice to the Maharashtra GST number. He will pay the tax under RCM. He will pay the tax under RCM through 3B. And then this regular registration of Maharashtra will raise the invoice to the ISD Maharashtra. And then he will distribute the ITC to the multiple location. Oh my God. Got this point? That was the main outcome of RCM. And if you read now, then there is one more problem. It is written, the word such is written. We will discuss such ITC. What is the issue in such ITC? The issue in such ITC is, suppose this advocate is located in Gujarat. Assume he is raising the invoice, normal invoice, to the Maharashtra. Which tax Maharashtra will pay? Maharashtra कौन सा टैक्स पे करेगा? CGST and SGST or IGST? IGST. He will pay IGST. But because the regular registration is in Maharashtra and IST registration is in Maharashtra, they cannot transfer IGST. सेम स्टेट है तो IGST नहीं लगेगा ना। अगर मैं इनवॉइसिंग कर रहा हूं विद इन द स्टेट, अगर मैं विद इन द स्टेट इनवॉइसिंग कर रहा हूं तो हो ही नहीं सकता ना, किस IGST चार्ज नहीं हो सकता। In that case, it will be C plus S, and then ISD who is receiving C plus S can distribute C plus S. तो कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, ये प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं।
इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, बिकॉज यू आर नाउ फाइनल स्टूडेंट. नाउ द प्रॉब्लम इज कि दैट द वर्ड सच आईटीसी इज नॉट बीइंग कंप्लाइड विद. क्योंकि लॉ ने क्या कहा मुझे, लॉ ने तो मुझे कहा सच आईटीसी सेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. सच मतलब जो आईटीसी का फॉर्म है. भाई आईटीसी आईजीएसटी अलग है, सीजीएसटी अलग है, एसजीएसटी अलग है, राइट. अगर इस पे टैक्स आई पे किया तो आई इसको मिलना चाहिए और आई इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन द करंट mechanism. That was the background. Let's read the amendment. ठीक है. Rule 39(1)(a) specifying procedure for distribution of ITC by IST has been amended to include the reference of IGST Act. That was very simple. 39(1)(a) में जो amendment हुआ था ना, ये तो पहले हो चुका था और हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं. जो अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट में हुआ था ना, वहां पे क्या था, ये जो 39(1)(a) में था ना, ये तो ऑलरेडी था 9394. This was already there 9394. That was added by the Finance Act 24. बट उन्होंने 5354 का रेफरेंस नहीं डाला. तो मार्केट में क्या कंफ्यूजन हो गया, दैट इन केस ऑफ आईएसडी the only intrastate RCM would be applicable, but if it is an intrastate RCM then there is no applicable, it is not applicable. क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ 9394 का रेफरेंस दिया. Therefore they have simply added the 53 and 54 as well. बाकी बात सेम है. A registered person having the same PAN and state code as ISD may issue an invoice, or as the case may be credit or debit note, as per the provision of 54(1)(a) to transfer the credit of such common service to the ISD. Such common, मैंने आपको कहा ना, such common input service, credit of such common input service, and such credit shall be distributed by the said ITC in the manner as provided in sub-rule 1. Thus, credit of the service taxable under RCM, whether it is CGST, SGST or IGST, will by IST can also be distributed by the IST effective from retrospectively इसको effective किया था. ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन, इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है, ये तो ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, तो रिपीटेटिव है. दिस इज रिपीटेटिव, राइट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एक बार कंफर्म करें, पहला अमेंडमेंट यही था हमारा. करेक्ट ना. सर्विस बाय वे ऑफ द लोकल डिलीवरी एक्सेप्ट व्हेन द पर्सन सप्लाइंग सर्विस थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. ठीक है. रिटर्न्स की बात करते हैं. Section 44 annual return है. Any idea what is the form number for annual return? Any idea what is the form number for annual return? 9 and 9C. Okay. 9A, 9B भी कुछ ऐसा है. Whether 9A, 9B is also there or it is not there now? Not now. Okay. Okay. What is the status? Whether it is applicable, not applicable, let me talk about. GSTR, सी पहले हम बात करते हैं रेगुलर टैक्स पेयर की. रेगुलर टैक्स पेयर विल फाइल द GSTR 9 एंड GSTR 9C ओनली. पहले भी यही था, आज भी यही है. 9 के रिगार्ड में एक एग्जेम्पशन दी है अप टू 2 करोड़
up to 2 crore. In exercise of the above power, the commissioner, in respect of filing of annual return, has exempted जिसका 2 करोड़ का टर्नओवर है, डबल एटी। और 9C is not applicable if turnover is up to rupees 9C is not applicable if turnover is up to rupees कितना? Asking the question कि 9C will not be applicable if turnover is up to 5 करोड़। ठीक है, ये तो बार रेगुलर टैक्स पेयर की। और ये वाला जो बात है ना, हर बार क्या करते थे, हर बार एक फाइनेंशियल ईयर का एग्जेम्पशन देते थे। हर बार क्या करते थे, सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर का एग्जेम्पशन देते थे। और इस बार उन्होंने क्या किया, दे हैव एडेड द वर्ड ऑनवर्ड। दिस ईयर व्हाट दे हैव डिड, दिस ईयर दे हैव एडेड द वर्ड ऑनवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं कंपोजिशन डीलर की। कंपोजिशन डीलर विल फाइल द will pay the tax through CMP 08 on quarterly basis, will file the return GSTR4 that is earlier it was quarterly but now frequency made annually, but GSTR4 को मैं एनुअल रिटर्न नहीं बोल सकता। बी केयरफुल, बी केयरफुल। GSTR4 की फ्रीक्वेंसी फ्रॉम क्वार्टरली बिकम ईयरली, but it doesn't mean कि GSTR4 is an annual return, because annual return तो सेक्शन 44 का रिटर्न है। एनुअल रिटर्न जीएसटी लॉ में कहां डिफाइंड है, सेक्शन 44 में। बट GSTR4 का जो डेफिनेशन है, GSTR4 कहां से डिराइव होता है, सेक्शन 39 से, रीड विद रूल 62 से। सेक्शन 44 में कंपोजिशन के लिए कौन सा डिफाइन किया गया, GSTR 9A। 9A is applicable in the current date as well, but because of this exemption, so it become redundant। क्योंकि कंपोजिशन डीलर की मैक्सिमम टर्नओवर कितनी हो सकती है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टर्नओवर ऑफ कंपोजिशन डीलर? कितनी टर्नओवर हो सकती है मैक्सिमम? 5 करोड़। ओ, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कितना? 1.5 CR, बोथ आर करेक्ट। तो अगर 1.5 करोड़ तक मैक्सिमम टर्नओवर हो सकती है और 2 करोड़ तक एग्जाम कर लिया, तो एक्चुअली क्या है, 9A विल बी नॉट बी एप्लीकेबल। तो आज भी लॉ में स्टिल देयर, प्लीज नोट, लॉ में स्टिल देयर, GSTR 9A स्टिल देयर। ओनली प्रॉब्लम, ओनली प्रॉब्लम कि दैट बिकॉज इट इज एग्जेम्प्टेड, सो देयरफॉर इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। और 9B क्या है? 9B ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि लाइबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, उनके लिए लॉ में था, बट इसका फॉर्म कभी नहीं आया, इसका फॉर्म कभी नहीं आया, देयरफॉर इट इज नॉट येट इफेक्टिव। सी, अगर कोई रिटर्न फिल करवाना है लॉ में, तो उसका फॉर्म देना पड़ेगा, राइट? उसको उसका फॉर्मेट बताना पड़ेगा ना कि कैसा होगा 9B। but this format has not been given by the CBIC till date, therefore this is not applicable। ठीक है, so this is all about the annual return। just छोटा सा ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, एंड देन विल रिज्यूम। सुख जी, 10 मिनट का ब्रेक स्टार्ट करते हैं।
filing of annual return which has been exempted up to 2 crore rupees. Now we are talking about the refund. Provisional refund to be granted on the basis of identification and evaluation of the risk by the system. Rule 91 sub rule 2 dealing with grant of the provisional refund has been substituted to provide proper officer on the basis of identification and evaluation of the risk by the system shall make an order in the prescribed form sanctioning the refund due to the said applicant on a provisional basis within a period not exceeding 7 days from the date of the acknowledgement under Rule 90 sub Rule 1, Rule 90 sub Rule 2. The proper officer for reason to be recorded in writing may not grant refund on the provisional basis and proceed with the order under Rule 92. However, said order shall not be required to be revalidated by the officer. Person not allowed to refund on provisional basis. Rule 54 Section 54 subsection 6 says that officer may, in the case of any claim for the refund on account of the zero rated supplies of the goods or services made by the registered person, other than such category of the registered person as may be notified, refund on a provisional basis 90% of the amount so claimed in such manner subject to such condition and limitation, make an order 54.5 for the final settlement of the refund after due verification. In exercise of the power 54 subsection 6, the central government hereby notify the following category of the registered person who shall not be allowed to refund on provisional basis. Namely, any person who has not undergone Aadhaar authentication under Rule 10 sub Rule B, capital B of the CGST rule. Pehla, any person who is engaged in the following supply: pan masala, tobacco, essential oil, erica nuts. मतलब क्या हुआ? 54(6) में जो पावर है उस पावर को यूज करते हुए उन्होंने नोटिफाई किया कि इनको प्रोविजनल रिफंड नहीं दिया जाएगा. मतलब क्या हुआ? इनका रिफंड ही नहीं दिया जाएगा या रिफंड दिया जाएगा? रिफंड दिया जाएगा बट आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन. मतलब जो डॉक्यूमेंट वो सब वेरीफाई करने के बाद. डिमांड एंड रिकवरी सेक्शन monetary limit prescribed for issuance of the SCN and passing the order. Board has assigned the officer mentioned in the table below the function as the proper officer in relation to issuance of so-called notice, passing the order up to the prescribed monetary limit. Main same superintendent of the central tax not exceeding 10 lakh, CGST, IGST not exceeding 20 lakh. डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर 10 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, तो इसका डबल हो जाएगा. एडिशनली जॉइंट कमिश्नर अबव 1 करोड़ विदाउट एनी लिमिट. इट इज क्लैरिफाइड दैट that so-called notice issued under 74A involve the demand of both CGST and IGST. The proper officer shall be determined on the basis of the combined CGST and IGST respective to the individual amount of the CGST or IGST which may exceed the prescribed monetary limit. The officer shall be determined based on the highest amount of the tax specified in the SCN and statement across all the tax period. Proper officer shall be determined on the amount of tax demanded excluding the penalties from the calculation. Circular 254. Offense and penalties and ethical practices under GST. Monetary limit prescribed for issuance of all SCN passing the order under section 122. So same, I am not repeating. Circular 254. It is also clarified that where a so-called notice issued under section 122 involving the demand of the penalty in relation to both CGST and IGST, the officer shall be determined on the basis of the
combined amount of the penalty in relation to both C and I, irrespective of the individual amount of the penalty which may exceed the prescribed monetary limit. Appeals and revision. Rules pertaining to the appeal to the tribunal are amended. Following changes has been made. Single member bench. Appeal where the tax or ITC involved for the amount of the fine, fee, penalty determined in any order against does not exceed 50 lakh rupees and which does not involve any question of law, with the approval of the president and subject to the condition on the recommendation the council be heard by a single member, and all other cases shall be heard together by one judicial, one technical. For the purpose of reckoning the amount of 50 lakh rupees, the cumulative tax or ITC involved or fine, fee, penalty shall be determined with reference to all issues and all tax period covered in the order appealed against. जितना भी टोटल है, कितने each फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, टोटल है, टोटल ऑर्डर जिसके अपील कर रहे हैं. Rule 110 and 111 dealing with the appeal to the appellate tribunal has been amended to provide as under: appeal by the aggrieved person from form for filing appeal. An appeal to the appellate tribunal shall be filed in GST APL 05 along with relevant document electronically, and provisional acknowledgement in Part A of APL 02 capital A shall be issued to the appellant immediately. क्या डिलीट किया है? An appeal to the appellate tribunal may be filed manually in the APL 05 along with relevant document only if the registrar allow the same by issuing the special order or general order subject to such condition and restriction, and in such a provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately. Department appeal. An application to the tribunal shall be filed in the APL 7 along with relevant document electronically, and provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately. अगेन मैनुअल फाइलिंग वाला पॉइंट डिलीट कर दिया. जनरल प्रोविजन इन केस ऑफ द अपील बाय द aggrieved person and department appeal. Memorandum of cross objection, if any, shall be filed electronically in APL 06. Again APL 06 मैनुअली जो था उसको omit कर दिया. Date of filing appeal, where the order appealed against is uploaded on the common portal. A final acknowledgement indicating appeal number shall be issued in Part B of 02A on removal of the defects, if any, and the date of the issue of the provisional acknowledgement shall be considered as the date of filing of appeal. मतलब जहां पे पहली कैटेगरी होगी कि जहां पे ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड हुआ है तो वहां पे फाइलिंग ऑफ अपील क्या होगी, जो एक्नॉलेजमेंट पार्ट बी में मिलेगा इंडिकेटिंग द अपील नंबर. अगर ऑर्डर कॉमन पोर्टल पर अपलोडेड नहीं है, then the appellant shall submit or upload a self-certified copy of the said period within a period of 7 days from the date of filing of appeal of APL 05 or 07, and final acknowledgement indicating appeal number shall be issued in Part B of APL 02A on removal of the defect, if any, and the date of the issue of the provisional acknowledgement shall be considered as the date of the filing of appeal. तीसरा, where the said self-certified copy of the order is submitted after a period of 7 days from the filing of appeal. तो जिस तारीख को a final acknowledgement indicating appeal number shall be issued in Part B of APL 02A on removal of the defect, if any, and the date of submission of the self-certified copy या self-attested copy shall be considered as the date of the filing of appeal. तो 7 दिन के बाद करेंगे तो जिस दिन जमा करवाएंगे that date will be considered the date of appeal. Rule 113 of the CGST rule dealing with the order of appellate tribunal has been amended. The appellate tribunal, along with its order under subsection 113 subsection 1, or goes to be issued the summary of the order in the APL 04A, clearly indicating the final amount of the demand confirmed by the appellate tribunal.
अब कस्टम के आगे तो हमारी जो जीएसटी रिलेटेड थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं विद रेस्पेक्ट टू स्टैट्यूटरी अपडेट्स ऑफ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, दो स्टैट्यूटरी अपडेट फॉर जनवरी 26 एग्जामिनेशन था वो ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको रीड करते हैं बाई एज ए रिवीजन, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हमारे पास टाइम है एंड देयरफॉर आई एम सेइंग regulated entities such as bank, NBFC have been instructed by the RBI itna to discontinue the use of the penal interest for non-compliance with loan terms. As per the instruction, instead of the penal interest, RE registered regulated entities are to levy penal charges for non-compliance. The intent of the levy the penal charges is essential to inculcate a sense of the credit discipline. These instructions are effective from 1 Jan 1st Jan 2024 does not apply to the credit card external commercial borrowing. This issue will arise for consideration was whether penal charges are in the nature of the payment या consideration for tolerating an act। तो सर्कुलर 170 ये मैं रीड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने शायद रीड नहीं किया था या किसी और फैकल्टी ने आपको पढ़ाया होगा ये वाला पार्ट। Circular 178 that certain payments such as liquidated damage, breach of contract are not a consideration for tolerating the act. They are rather amount recovered to the deter such act. Such amount are preventing breach of the contract or non-performance and thus mere event in a contract. The essence of the contract is its performance and not its breach, meaning thereby the parties enter into the contract for executions and not its breach. Therefore, the penal charges levied by the RA in compliance with the RBI direction are essentially in the nature of the charges for breach of the term of the contract and hence no GST. ठीक है, charge of the GST. So if the RCM services स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसको अगर दिया जाएगा तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसको प्रोवाइड किया जाएगा देन आरसीएम वुड बी एप्लीकेबल। इफ यू कैन रिकॉल प्लीज टेल मी। Sponsorship provided by whom, then it will be covered under RCM. सो कौन सप्लायर होना चाहिए, कौन रिसिपिएंट होना चाहिए, हु इज द सप्लायर, हु इज द रिसिपिएंट। नॉर्मली नॉट टॉक अबाउट अमेंडमेंट, जो भी आपने आरसीएम चैप्टर में रीड किया होगा वो अमेंडेड रीड किया होगा, मतलब जो मैं ये बात कर रहा हूँ आपने ऑलरेडी रीड कर लिया। तो मुझे आप बता दीजिए कि अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है तो आरसीएम कब एप्लीकेबल होगा। सप्लायर शुड बी और रिसिपिएंट शुड बी, इन दोनों को आपको मुझे बताना है कि वो शुड बी द सप्लायर, वो शुड बी द रिसिपिएंट। अगर आइडिया नहीं है तो नो आइडिया लिख दीजिए ताकि मैं फॉर मूव कर सकूं। इट्स ए रिवीजन, it's a revision of all amendment of the Finance Act 24 which you have already read. No idea? चलो रीड कर लेते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू होना चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। पहले था एनी पर्सन सप्लायर, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। मुझे एक बात बताइए, इस अमेंडमेंट को जो सीरियल नंबर 4 का जो अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट को रीड करके मुझे एक बात बताइए, इसके कारण कौन सा ट्रांजेक्शन बिकम फॉरवर्ड चार्ज इंस्टेड ऑफ आरसीएम, which transaction will fall under forward charge and not under RCM by this amendment. इस amendment के कारण which transaction which was earlier under RCM
but now because of the amendment it become forward charge. Sponsorship services provided by the body corporate to the body corporate or partnership firm. Provided by the body corporate to the body corporate or to the partnership firm which was under RCM now become forward charge. Absolutely correct. 5AB में इमूवेबल प्रॉपर्टी में आरसीएम कब कब लगता है? टेल मी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में आरसीएम कब कब लगता है? कवर ऑल द सिचुएशन, पॉसिबल सर्कमस्टांसेस, कवर ऑल द पॉसिबल सर्कमस्टांसेस. इमूवेबल प्रॉपर्टी पर आरसीएम कब कब एप्लीकेबल होता है? रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल दोनों की बात कर दीजिए आप. सबसे पहले बताइए रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग. रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग कब आरसी में आएगा? रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग कब आरसी में आएगा? रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग कब आरसी में आएगा? इफ इट इज गिवन टू द रजिस्टर्ड पर्सन. एनी एक्सक्लूजन? एनी एक्सक्लूजन in explanation or something like that? Any exclusion? Any exclusion? रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में एक्सक्लूजन नहीं है, ये वाला कंपोजिशन वाला. इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है और मैं आपको दे रहा हूं, आप कौन है? आप कंपोजिशन डीलर हैं. यू नीड टू पे द टैक्स अंडर आरसीएम. यू आर यूजिंग फॉर योर ओन पर्पस, बिजनेस पर्पस. वहां एक एग्जिम्पशन रिलैक्सेशन ये था कि एक्सेप्ट फॉर, मतलब अगर प्रोपराइटर या पार्टनर अपने रहने के लिए यूज करता है देन दैट वुड नॉट बी टैक्सेबल. अब जो कंपोजिशन वाला एक्सेप्शन ऐड हुआ दैट वाज एडेड इन द रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल बिल्डिंग. तो रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल बिल्डिंग मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल, वहां पर क्या है? सप्लायर शुड बी एनी पर्सन या एनी रजिस्टर्ड पर्सन या एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन. ये बात गौर कीजिएगा, मतलब इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम. इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम. सी, अगर मैं रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की बात करता हूं, वहां पर वर्ड लिखा हुआ है एनी पर्सन. इट मींस इट इंक्लूड रजिस्टर्ड पर्सन, इट इंक्लूड अनरजिस्टर्ड पर्सन बोथ. पर अगर मैं कॉमर्शियल बिल्डिंग की बात करता हूं, इन दैट केस द वर्ड इज रिटन सप्लाई शुड बी एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन और रिसिपिएंट शुड बी रजिस्टर्ड, बट वहां पे एक्सेप्शन डाल दिया अदर देन वाज ऑप्टेड अंडर कंपोजिशन. Other than was opted under composition. It means now let me open that amendment. इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन है तो क्या टैक्स लगेगा? Will he require to pay the tax under RCM? Will he require to pay the tax under RCM? Commercial composition taxpayer अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग लेता है तो क्या उसे टैक्स पे करना अंडर आरसीएम? नो. ये तो बड़ा शानदार अमेंडमेंट क्लैरिफिकेशन था. मतलब आई वुड से 9(5) के रिगार्ड में
मतलब आई थिंक कुछ हाई कोर्ट में पेंडिंग केस भी है, बट देयर वाज ए क्लैरिटी। एक बात बताइए, 95 का पर्सन जो है जोमेटो स्विगी, एज्यूम दैट टाइम इज जोमेटो, तो मैं जो टैक्स पे करूंगा, मैं दो ट्रांजेक्शन पर टैक्स पे करूंगा। कैन यू टेल मी ऑन विच टू ट्रांजेक्शन आई विल पे द टैक्स? ब्रॉडली आई एम सेइंग। I am Zomato, I will pay the tax majorly on two transaction. Majorly on two transaction. एक तो जो मैं रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहा हूं, मतलब जो सप्लायर है जिसने मुझे यूज किया है फॉर डिलीवरिंग, देन आई एम कलेक्टिंग। दिस विल ऑलवेज बी पेड इन कैश और इट कैन बी थ्रू आईटीसी ऑल्सो। ऑलवेज कैश। जोमेटो दो तरह के ट्रांजेक्शन पर टैक्स पे करता है। कौन कौन से दो ट्रांजेक्शन? देखो, आप रेस्टोरेंट है, मैं जोमेटो हूं, और लेट से मिस्टर ए इज माय कस्टमर। उसने ऑर्डर दिया आपको थ्रू माय ऐप, तो मेरा जो भी डिलीवरी एजेंट है वो आपसे कलेक्ट करके उसको डिलीवर कर देगा। आई विल कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द मिस्टर ए एंड पे द सेम टू द गवर्नमेंट इन कैश। इसमें आईटीसी यूज नहीं कर सकते। दूसरा कौन सा? एक बात बताइए, मैं आपके लिए ये काम कर रहा हूं, विल आई नॉट चार्ज यू? विल आई नॉट टेक कमीशन फ्रॉम यू? विल आई नॉट टेक कमीशन? आई विल टेक। सो जो मैं कमीशन लूंगा आपसे, उसके लिए मैं इनवॉइस रेज करूंगा, बिकॉज आई एम रजिस्टर्ड, तो आई विल रेज इनवॉइस अंडर एफसीएम और आरसीएम और नो टैक्स। एफसीएम। तो जो मैं आपको इनवॉइस रेज करूंगा, लेट्स से मेरा जो कमीशन का इनवॉइस है जो मैंने आपको रेज किया, आई विल टेक द टैक्स, आई विल ऑल्सो एड द टैक्स, कलेक्ट फ्रॉम यू, एंड दिस अमाउंट will always be paid in cash or I can use the ITC. Can use the ITC. जो मैंने एंटायर सेटअप तैयार किया, जो मेरा कॉलिंग है, जो मेरा सॉफ्टवेयर है, जो मेरी टीम है, जो मेरी बिल्डिंग का रेंट है, एवरीथिंग, इस पर्टिकुलर सेटअप का जो प्रिपरेशन है वो मैंने किसके लिए किया है? जो मैं कमीशन कलेक्ट करता हूं, भाई ये जो सेटअप मैंने तैयार किया है वो किसके लिए तैयार किया है? जो मैं आपको कमीशन का इनवॉइस रेज करता हूं उसके लिए। सो दे आर सेइंग नो प्रॉब्लम इन यूजिंग द आईटीसी अगेंस्ट दिस कमीशन इनवॉइस। बट जो आप कलेक्ट करते हैं किसी और के ब्याह पर, वो तो आप कैश में कलेक्ट करते हो, तो कैश में गवर्नमेंट को पे कर दो ना। योर दिस इज नॉट योर बिजनेस। सो रेस्टोरेंट इज नॉट माई बिजनेस। ओनली गवर्नमेंट हैज imposed द liability टू पे द टैक्स, सो आई एम पेइंग द टैक्स। करेक्ट। इसको रीड करते हैं। वेदर issue required to pay the tax liable to reverse the proportionate ITC on his input and input service to the extent of the supplies made under section 95। क्या लगता है आपको? What do you think? Whether issue is required to reverse the ITC to the extent of 95, because वो तो हमेशा कैश में पे करना है। No reversal of ITC. Why? कि IC reversal of ITC कब बनता है? When the ITC need to be reversed, you tell me, ITC रिवर्स मुझे कब करना है? ITC रिवर्स मुझे कब करना है? When my outward supply is exempted, correct? And outward supply is exempted is written where? 17 subsection 3 में। वहां पर क्या 95 का रेफरेंस है? Whether it is being told that 95 will be considered as exempted? No, वहां पे कोई रेफरेंस नहीं है। तो therefore I being a Zomato not required to reverse the ITC, that is very clear। तो क्या आंसर है?
It has been clarified by circular 167. देखो एक बढ़िया सर्कुलर था ईसीओ के रिगार्ड में 167 और उसके बाद में ये वाला सर्कुलर, that ECO shall not be required to reverse the ITC on account of restaurant service on which he paid the tax under section 95. It has been also clarified that ITC will not be allowed to be utilized for payment of tax under section 95 and whole of the tax liability will require to be paid in cash. The principle also applies to the supplies made in respect of other services specified in 9 subsection 5. Okay. It has clarified that ECO is liable to pay tax under 95 on notified services not required to reverse the ITC proportionately under section 17.1 and 17.2 to the extent of 95. Correct? It is further clarified that ECO will be required to pay the full tax liability on 95 in cash. That is only through electronic cash ledger. The credit availed by him in relation to the input and input service used to facilitate such supply cannot be used. The input and input service जो credit उसने avail किया है to facilitate the supply cannot be used to discharge the liability of 95. However, such credit can be utilized for discharging the tax liability in respect of the supply of the service on his own account. Circular 240. तो दो बड़े इंपॉर्टेंट सर्कुलर थे 167 and 240 regarding this issue. ठीक है. Clarification whether DDA can be treated as a local authority under GST law. The local authority to the business entity is covered under RCM. ठीक है. The issue whether DDA can be treated as local authority. Local authority is being defined in the GST under section 269. Means a municipal committee, Jila Parishad, district board, and any other authority legally entitled to, entrusted to by the central government or state government with the control or management of municipal or local fund. It means the authority which is similar to the elected self-governing body such as municipal committee, which is entrusted with the local authority with the control and the municipality, the management of the municipal and local fund can be also treated as local authority. Therefore, it has been clarified that DTA cannot be treated as local authority as DTA does not meet the requirement of the local authority defined in the section 2 clause 69. Place of the supply. Clarification, just only 1 minute. Only 1 minute. Place of supply. Clarification regarding the place of the supply of online service supplied by the supplier of the service to the unregistered person. It has been clarified that section 12 subsection 2 clause B read with section 31 subsection 2 and the proviso to the rule 46F lead to the conclusion that in respect of the supply of the service made to unregistered person, irrespective of the value,
supplier is mandatorily required to record the name of the state of the unregistered recipient in case involving the online money gaming or supply of the taxable service through e-commerce operator or supply of the OIDAR. Recording the name of the state of unregistered recipient on the tax invoice shall be deemed as the address on the record for the purpose of determining the place of the supply of 12(2)(b). Accordingly, in such cases, the place of the supply shall be considered that LOR, location of recipient. Combined reading of definition of e-commerce and e-commerce operator along with rule 46 clause F, 46F क्या एक बार read कर लेते हैं. Name and address of the recipient and address of the delivery along with the name of the state and the code. If such recipient is unregistered and where the taxable value is less than 50,000 and recipient requests that such detail to be recorded in the tax invoice. ठीक है. Proviso says that in case which involve the supply of online money gaming or in case where the taxable service is supplied by or through e-commerce operator or by a supplier of OIDAR to a recipient who is unregistered, irrespective of the value, the tax invoice issued by the registered person shall contain the name of the state and the same shall be deemed to be the address on the record. ठीक है. So हाँ, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, DDA दिल्ली. राइट संजय. Service supplied to the unregistered recipient over digital or electronic network either by the supplier using his own digital or electronic facility or platform or through any other electronic or digital platform owned and operated by an independent e-commerce operator will be covered under the proviso. It is accordingly clarified that proviso to rule 46F shall be applicable in respect of all the online supply of the service supplied to an unregistered recipient in addition to the supply of online money gaming and OIDAR. Some of the example such as subscription of e-newspaper, e-magazine, online subscription of entertainment like OTT platforms, online telecom services, digital services, etc. Therefore, in respect of following cases of the supply to unregistered recipient, supplier are mandatorily required to record the name of the state of the recipient on the tax invoice irrespective of the value and to declare the POS as the location of recipient based on the name of the state in their details of GST R1 and 1A, supply of the online or digital service, OIDAR and online money gaming. तीनों के रिगार्ड में ये क्लैरिटी दे दी. Exemption from GST. Supply of service by way of providing metering equipment on rent, testing for meter, transformer, capacitor, releasing electricity connection, shifting of meter, service line, issuing duplicate bill, which are incidental or ancillary to the supply of transmission एंड को काट के और कर दिया बिकॉज इट कैन बी ऑल्सो बाय द टू सेपरेट पर्सन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज. ठीक है. एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द नेशनल स्किल कॉर्पोरेशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NSDC, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन, awarding body recognized by the National Council, an assessment agency recognized by the National Council for Vocational Education, a training body accredited with an awarding body that is recognized by the National Council, a training partner approved by the NSDC. ये एक नया ऐड किया. तो अगर मैं NSDC का, you all know कि that National Skill Development Corporation में we can add ourselves as a training partner also.
तो अगर आपने आपको ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में ऐड किया, इन दैट केस इट विल बी exempted in relation to the National Skill Development Program or any other scheme implemented by NSGC or vocational skill development course or national skill qualification framework aligned qualification or skill in respect of National Council for the Vocational Education Training has approved the qualification package. New exemptions. Service of the insurance provided by the Motor Vehicle Accident Fund constituted under Motor Vehicle Act against contribution made by the insurer out of the premium collected for third-party insurance of the motor vehicle. New definition introduced. Insurer has the same meaning as assigned to the Section 2 clause subsection 9 of the Insurance Act. बाकी सेम है. उसके बाद में clarification in respect of the applicability of the GST on the facility management service provided to MCD, Municipal Corporation of Delhi Headquarters. MCD is receiving the service such as housekeeping, civil maintenance, furniture maintenance, horticulture from Facility Management Agency for the upkeep of their office. The issue which arose for consideration whether such service will be exempted in entry number 3A. Can anybody tell me what is the entry number 3A? Can anybody tell me what is the entry number 3A? आप मुझे बता सकते हो 3A क्या एंट्री है एग्जेम्पशन की? सर्विस टू द प्योर सर्विस, करेक्ट? प्योर सर्विस अगर 100% सर्विस है तो एग्जेम्प्टेड हो जाती है. क्लैरिफिकेशन. Entry 3A provides the exemption of composite supply of the goods and services in which the value of the supply of the goods constituted not more than 25%. It means pure service serial number 3 हो गया और 75-25 वाला कॉन्सेप्ट सीरियल नंबर 3A में हो गया. ठीक है. प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एनी एक्टिविटी in relation to any function interested to a panchayat under Article 243G or in relation to the function interested to the municipality under Article 243W. Service of the facility management such as housekeeping, civil maintenance, furniture maintenance, horticulture agency for the upkeep of the office are not supplied in performing any function entrusted to a municipality under Article 243W. Such services are not covered in the scope of entry number 3A. Thus, it has been clarified that GST is applicable on the service provided by the facility management agency to the MCD for upkeep to its headquarter building at applicable rate, and these services are not covered under the scope of entry number 3A. ठीक है. Clarification in respect of an exemption. Clarification in respect of an exemption on the payment aggregator in relation to the settlement up to rupees 2000 in a single transaction through credit card, debit card, or any other card services. Whether exemption under entry 34 is available to the payment aggregator in relation to the settlement of amount up to rupees 2000 in the single transaction transacted through credit card, debit card, or any other payment card. Clarification. Payment aggregator are entities that facilitate e-commerce sites and merchant to accept various payment instruments from their customer without the need of e-commerce site, and merchant to create a separate payment integration system of their own. In the process, payment aggregator receive the payment from customer pool and transfer them onto the merchant within a specified time period. Entry number 34 provides exemption to the services by an acquiring bank to any person in relation to the settlement of 2000 rupees in the single transaction. Acquiring bank means banking company
Financial institution, NBFC, who make the payment to any person who accepts such card. PA receive the payment from customer in an escrow account and are obligated to do the final settlement with the merchant within the time period specified by the RBI. Therefore, RBI regulate the PA involved the settlement process in making the payment are covered by the second part of acquiring bank. That is, any other person who make the payment to any person who accepts such card. Payment gateways are identified as entity that provide technology infra to route and facilitate processing of an online payment transaction without any involvement in handling of fund. Payment gateway are defined as entities that provide technology infra to route and facilitate processing of an online payment without involvement of in handling of funds. ठीक है, तो पेमेंट एग्रीगेटर, कस्टमर, मर्चेंट, escrow account. So it has been clarified that PA fall within the definition of acquiring bank given in the explanation to the said exemption entry, as they make the payment to the merchant who accept credit card, debit card, any other consequently exemption under entry 34 available to the RBI in relation to the settlement of 2000 rupees in a single transaction will also be available to the payment aggregator. 5 मिनट रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक पढ़ा हमने. लेट्स डू रिवीजन. हमने कितने पेज पढ़ लिए? 20 पेज पढ़ लिए, राइट? हाँ, regulated entity charging the penal, will it be leviable to GST or not? जो regulated entities है, they are charging the penal interest, penal charges. Will it be levy the GST? Will the GST be applicable or not? क्या GST लगेगा उस penal interest पर या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, not leviable. Correct. RCM में amendment क्या था sponsorship services में? What was that amendment? RCM में जो amendment था with respect to sponsorship services, what was that amendment? उसमें क्या amendment था? RCM services with respect to sponsorship services. सप्लायर में क्या ऐड किया था? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट. इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर है तो आरसीएम नहीं लगेगा, एफसीएम होगा हमेशा. सिमिलरली, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल, renting of immovable property other than residential, it was covered under RCM. What was the amendment? What was the amendment? Correct. Correct. वहां से कंपोजिशन को एक्सक्लूड कर दिया. इसका मतलब will the composition pay the tax under RCM or will not pay the tax under RCM? Will pay the tax under RCM or will not pay? Answer is not pay. अच्छा, आईटीसी एंड कैश, अगर जोमेटो है 95 का ट्रांजेक्शन है तो कौन सा ट्रांजेक्शन कैश में पे होगा, कौन सा ट्रांजेक्शन के लिए आईटीसी यूज कर सकता है, और क्या आईटीसी रिवर्सल एप्लीकेबल है? पहला क्वेश्चन, जो 95 के थ्रू जो होटल रेस्टोरेंट सर्विस है वो हमेशा ट्रांजेक्शन कैश में होगा या आईटीसी यूज कर सकते हैं? ओनली कैश. जो वो ट्रांजेक्शन 95 का कर रहे हैं, क्या उसके एक्सटेंट में प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? 17(1) and 2. Will they require to reverse the proportionate ITC? Will they require to reverse the proportionate ITC as required by 17(1) and 2? No. And third is, क्या वो जो अदर सर्विसेज जो अपने ओन बेसिस पे दे रहे हैं, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, ओन कैपेसिटी में दे रहे हैं, क्या उसके लिए आईटीसी यूज कर सकते हैं? आंसर इज यस, दे कैन यूज. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो 3 बात हमने पढ़ी थी रिगार्डिंग 95. क्या डीडीए is considered as local authority? Whether DDA is considered as local authority? Whether DDA is considered as local authority? Answer is no, it is not considered as local authority. ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, OIDAR, इन सबको क्या
प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना मैंडेटरी है जब रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वेदर दे नीड टू मेंशन द प्लेस ऑफ सप्लाई if the recipient is unregistered person. आंसर इज यस। सिर्फ पूरा एड्रेस लिखना है या सिटी डिस्ट्रिक्ट लिखना है या खाली स्टेट का कोड लिखना है? ओनली स्टेट कोड या सब कुछ लिखना है? ओनली स्टेट, ओनली स्टेट। सिंपली जो उसके स्टेट का नाम है उतना लिख दिया, दैट इज सफिशियंट। से राजस्थान से वट एवर द प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा एक चीज बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कशन। अगर मैं सर्विस कर रहा हूं अभी लेट्स से दिल्ली में, ठीक है, मैं हूं राजस्थान से, और अगर मैंने कोई अमेजन पे ऑर्डर किया, ऑनलाइन ऑर्डर किया, उसकी डिलीवरी राजस्थान हो रही है, मैं भी अनरजिस्टर्ड हूँ और राजस्थान में जहां डिलीवरी कर रहा हूँ वो भी अनरजिस्टर्ड है, लेट से मेरे होम टाउन में मैं अपने रिलेटिव्स को भेज रहा हूँ कुछ सामान, तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, दिल्ली या राजस्थान? क्यों? यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली की राजस्थान? द आंसर इज राजस्थान। यहाँ पे एक नया पॉइंट ऐड किया था, नया क्लॉज ऐड किया था जिसके रिगार्ड में हम प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट? कौन सी नई एग्जेम्पशंस ऐड हुई है रिगार्डिंग द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी के रिगार्ड में? एनी एग्जेम्पशंस which has been added in the NSDC? ट्रेनर, नॉट ट्रेनिंग पार्टनर। ओके, ट्रेनिंग पार्टनर था। ट्रेनर अगर मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ तो वो शायद ऑलरेडी एग्जाम था, बट ट्रेनिंग पार्टनर था, एब्सोल्युटली करेक्ट, नो प्रॉब्लम। वेरी ट्रू, वेरी ट्रेनिंग पार्टनर, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो जो एमसीडी का हेड ऑफिस है, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हेडक्वार्टर फॉर रिसीविंग लाइक हाउसकीपिंग, सिविल मेंटेनेंस सर्विसेज, हॉर्टिकल्चर, will that be exempted? Will that be exempted? Answer is no. Correct. Not the duties of the आर्टिकल 243W म्युनिसिपलिटी या आर्टिकल 243G था, एक आर्टिकल 243G और W था, वो फंक्शन इंटरेस्टेड नहीं कर रहे, तो देयरफॉर इट इज नॉट अवेलेबल। सो करेक्ट। नाउ लेट्स टेक ए ब्रेक ऑफ 10 मिनट एंड देन विल रिज्यूम एंड अगेन स्टार्ट द टाइम ऑफ सप्लाई। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई, 10 मिनट। अशोक जी।
clarification on GST treatment of the vouchers. What is the taxability of the vouchers? Can you please tell me, Geet or Sanjay, what is the taxability of the vouchers? What is the taxability of the vouchers? Vouchers, अगर मैं आपको वाउचर देता हूं, let's say you are giving me 1,000 rupees and I am giving you the voucher of 1,000 rupees, will it be taxable? Will it be taxable? Answer is no. अब हम इसको taxable नहीं मानेंगे. So voucher के issuance पर taxability is done away. Means अगर आपको याद होगा, इंटर में हम लोग पढ़ा करते थे कि वाउचर अगर आइडेंटिफिएबल है देन इट इज टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस, और अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल नहीं है तो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वाउचर इट वाज टैक्सेबल, राइट? बट टैक्सेबिलिटी थी. बट नाउ व्हाट हैपेंड, देयर वाज एन जजमेंट ऑफ आई थिंक मद्रास हाई कोर्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, तो हाई कोर्ट ने कहा कि वाउचर कैन नॉट बी ए सप्लाई एट ऑल. वाउचर इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट. तो इसका टैक्सेबिलिटी तो हो ही नहीं सकता. So therefore they have omitted the provision of the 12, 4 and 13 subsection 4. Now how they have clarified, just that we need to read from the definition of the voucher. It emerges that voucher may be in the nature of the payment instrument which create an obligation on the supplier to accept it as consideration or part consideration for the supply. The issuance of the payment instrument, including prepaid instrument in India, is regulated by RBI in terms of the Payment Settlement Act. RBI master direction and the relevant notification circular communication by the RBI from time to time. Prepaid instrument as defined by RBI. Payment instrument that facilitate purchase of the goods and services against the value stored on such instrument. The value stored on such instrument represent the value paid by the holder by cash, by debit to a bank account, or by a credit card. The prepaid instrument can be issued as card, wallet, in any such form instrument which can be used to access the prepaid instrument as to use the amount therein. As per section 2 clause 75, money include an instrument recognized by RBI which is used as consideration to settle an obligation. On combined reading of the voucher as per section 2 clause 118 along with the definition of the money as per 2 section 75, the prepaid instrument given by the RBI following is observed. Case 1, where the voucher is covered as prepaid instrument recognized by RBI and used as consideration to settle an obligation. In such case, the voucher will fall under the definition of money. Therefore, the money is excluded from goods and services. The transaction in the voucher would be considered neither supply of the goods nor supply of service. Where voucher is not covered as prepaid instrument recognized by RBI, in such case, voucher cannot be treated as money. The voucher will be in the nature of an obligation on the supplier to receive it as consideration or part consideration, and to assure the beneficiary or voucher's holder to claim certain goods or services as specified in the voucher. In such case, the voucher can be considered as actionable claim, and actionable claim कहाँ cover है? Whether actionable claim is taxable, whether actionable claim is taxable in the GST. Right, it is covered in the schedule 3 and it is not taxable except yes, specified actionable claim. Absolutely correct. As vouchers are not covered in the definition, are not covered in the definition of specified actionable claim, therefore they are covered in the entry 6 of schedule 3 and are not taxable. Now, issue number 1.
where the transaction is voucher fall under the category of the supply, it is clarified that irrespective the voucher is covered as prepaid instrument recognized by RBI or not. The voucher is just an instrument which create an obligation on the supplier to accept it as consideration or the part consideration. And the transaction in the voucher themselves cannot be considered either as supply. However, supply of the underlying goods or services for which voucher are used may be taxable. What would be the GST treatment of transaction in the voucher by the distributor, sub-distributor or agent? There are primarily two models for distribution of the vouchers. There are primarily two models for distribution of the voucher through distribution, sub-distribution agent, where voucher are distributed through distributor, sub-distributor or dealer on principal to principal basis. In such case, the distributor or dealer purchase the voucher from the voucher issuer typically at a discounted rate and subsequently sell the same to the sub-distributor, corporate or end customer and generate the revenue through the trading margin, which is difference between selling price minus purchasing price. In such case, distributor or dealer own the voucher and operate autonomously with full control over the process from the voucher to the final sale. As per section 9, is chargeable on the supply as the transaction in the voucher is neither supply. Therefore, pure trading of the voucher in this case would not constitute either supply of the goods or supply of service. Accordingly, trading would not be taxable. Where voucher are distributed using distributor, sub-distributor, agent on commission or fee basis. In such case, the transaction between voucher issuer and distributor are on principal to agent basis. These arrangement as per the contract or agreement between distributor, sub-distributor, agent and the voucher issuer may specify a set of obligation on such agent and such as marketing, promotion and other related support activity against the commission fee or any other amount by whatever name called. In such case, distributor do not operate autonomously, do not own the voucher and only acting as agent. In such case, GST would be payable by such distributor or agent was acting as an agent of the voucher issuer on the commission or fee. Issue number 3. What would be the GST treatment for additional service such as advertisement, co-branding, marketing, promotion, customization, technical support, customer support, etc. In such case, the said service fees, service charge, affiliation charge, or other amount for supply of the such additional service to the voucher issuer as per the terms would be liable to GST. What would be the GST treatment for unredeemed voucher? In case the voucher remain unused or unredeemed at the end of their expiry, the business generally make book adjustment and account the said amount on account of the unredeemed voucher in the statement of income. The value of the unredeemed voucher is called as breakage. The issue which arose, the consideration was whether the amount attributable to unredeemed voucher can be considered as monetary value for any act or forbearance in respect of or in response or inducement for the supply of the goods or service, whether by the recipient or by any other person. As per section 9 subsection 1, CGST Act, GST is leviable only on the supply of the goods and or services. In case of the breakage, there is no redemption of voucher and there is only supply of goods and services. Therefore, there is no supply on account of unredeemed vouchers. As there is no supply, in case of the non-redemption of the voucher by the customer, the amount retained for unredeemed voucher by the voucher issuer cannot be construed as consideration for any supply. Accordingly, such amount attributable to unredeemed voucher would not be taxable as per the section 9 subsection 1. Circular 178 is a master circular, I can say, to clarify the schedule 2 para 5.
पैरा 5 में एक एंट्री है ना कि एग्री टू डू एक्ट, नॉट टू डू एक्ट, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ द सर्विस। तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए ये सर्कुलर 178 बड़ा मास्टर सर्कुलर है, मतलब ये गिवन द एम्पल क्लैरिटी that agreement to do or refrain from an act or should not be presumed to exist, and there must be an express or implied agreement, oral or written, or to do or abstain from doing something against payment of consideration for a taxable supply exist. Considering the principle laid down in the circular, it emerges that where the voucher is issued for the purpose of redemption in respect of the supply, there is no express or implied agreement, oral or written, between the issuer and the redeemer by the redeemer of the voucher issuer in case of non-redemption. It cannot be considered that non-redemption by the redeemer tantamount to the supply. Therefore, it appears that amount attributable to non-redemption of the voucher would not constitute as monetary value of any act or forbearance in respect of, or in response of, or for the inducement of, by whether by the recipient or by any other person. Therefore, no GST appear to be payable on such amount attributable to non-redemption of the voucher. Circular 243. So key reference उन्होंने ये बता दिया है। ITC. What was the amendment in the ITC? 16 to be X work contract. वैसे आपको क्या लगता है X work contract में let's see, in automobile sector, the contract between automobile dealer and OEM is generally known as X work contract. And as per the terms of the contract, the property in the goods pass to the dealer at the factory gate of the OEM when the goods are handed over to the transporter at the instance of dealer, and the delivery on the part of OEM is complete at the factory gate. Delivery of the goods under X work contract, automobile dealer, OEM. ठीक है. Now the transporter may be arranged by the OEM on behalf of the dealer, and where insurance is arranged, it may be also done on behalf of the dealer. मतलब इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टर दोनों की अरेंजमेंट ओईएम खुद कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द डीलर. एनी क्लेम इन केस ऑफ द लॉस हैज टू बी लॉस बाय द डीलर, नॉट बाय द ओईएम. ठीक है. इश्यू which arose for the consideration whether ITC can be availed by the dealer only after the vehicle are physically received by the automobile dealer in his business premises, or ITC can be availed on the date the vehicle are billed to him and handed over to the transporter by the OEM at the factory gate. What do you think? आपको क्या लगता है? मतलब जिस दिन OEM ने ट्रांसपोर्टर के दे दिया उस दिन वो 16(2)(b) का कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, या ट्रांसपोर्टर जब फिजिकली डिलीवरी करेगा तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगा? व्हाट डू यू थिंक? चलो रीड करते हैं क्लैरिफिकेशन. So clarification: in such scenario, the property in the said good can be considered to be passed on the dealer by the OEM upon handing over the goods to the transporter at the factory gate, meaning thereby that the goods can be considered to have been delivered to the registered person, though the transporter by the through the transporter by the supplier at his factory gate, and the supply of the said goods can be considered to have been at the factory gate of the OEM, even though the goods may be physically received at a later date after the transit period. क्या clarification है? Clause B of 16(2), the registered person can be considered to have received the goods at the time handing over of the goods by the supplier to the transporter at the factory gate for their
onward for their onward transmission to the said registered person. Is it clear? Now tell me, what is the answer? When the goods are delivered to the transporter, or when the correct. तो इसका मतलब ITC can be availed on the date the vehicle are built and handed over to the transporter by the OEM at the factory gate, and we are not required to wait. We are not required to wait till the goods are being physically received. The same principle is applicable in case of the supply of other goods also, where the contract between the supplier and the recipient are EX work. करेक्ट. तो बहुत होता है, ये तो बहुत ज्यादा होता है. सी फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ऑफ गुड्स. तो इंपोर्टर जैसी बिल ऑफ एंट्री पास होती है, ठीक है, गुड्स फिजिकली मिलता है, ठीक है, रिसीव मेरे को एक्चुअली फैक्ट्री तक आने में टाइम लगता होगा, लेकिन जैसे वो ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर दिया जाता है, इट मींस इट विल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड. द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एनी पर्सन द प्लेस. सो एक सेकेंड. And as per the terms of the contract, the goods are to be delivered by the supplier to the recipient or to any other person, including transporter, on behalf of the recipient and at his place of business. And the property in the goods is then transferred to the recipient at the time of such handing over. In such case, the said goods can be construed to have received by the said recipient at the time of handing over of the said goods to the recipient or to the transporter, as the case may be, as per the proviso to the 16 subsection 2 clause B. It is also mentioned that as per the provision of 16(1), a registered person is entitled to ITC only in respect of supply of the goods or services which is used or intended to be used in the course of furtherance of business. Thus, if the goods are found to be diverted for non-business purpose at any stage, either before physical receiving the goods or subsequently, then the registered person shall not entitled to avail the ITC. Further, if at any time after receiving the goods, such goods are lost, stolen, destroyed, write off, disposed of by way of gift or free sample, the registered person would not be entitled to the ITC in respect of such goods as per the 17(5) clause H, circular 241. Tax invoice, credit note and debit note. Rule 47 capital A has been inserted wide notification number itna with effect from 1 November 2024. 31 subsection 3 clause F provides that a registered person who is liable to pay the tax under 9394 shall issue an invoice with respect to goods or services received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods. As per 31 subsection 3 clause F, which was amended wide Finance Act 24 to incorporate enabling provision for prescribing the time period for issuance of the invoice. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था मालूम? RCM के ट्रांजेक्शन में the biggest issue कि the time limit is not being prescribed. The time limit is not being prescribed for RCM. This amendment was not applicable. ठीक है, that was applicable for September and January 25 examinations. क्या था 31(3)(f)? Notwithstanding anything contained in subsection 1 and subsection 2, a registered person who is liable to pay tax under 9394 shall, within the period as may be prescribed, issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of the receipt of the goods or services or both. A registered person who is liable to pay tax shall within the period as may be prescribed. तो उन्होंने क्या कर दिया? एक वर्ड ऐड कर दिया, मतलब ये वर्ड ऐड कर दिए कि कितने टाइम में इश्यू करना है जो प्रिस्क्राइब्ड किया गया. Therefore, the invoice by the recipient should be issued within the time period prescribed if he liable to pay tax. As a result,
The time limit for issuing the tax invoice has been prescribed by way of the Rule 47 capital A. What is the Rule 47 capital A? Where an invoice referred to in Rule 46 is required to be issued in 31 subsection 3 clause F by a registered person who is liable to pay the tax under RCM 9394. Invoice has to be issued within a period of 30 days. 30 days will be counted from the date of the receipt of the goods or services as the case may be. Thus, invoice to be issued within a period of 30 days from the date of the receipt of the said supply of the goods or services as the case may be. Can you tell me the corresponding amendment in the time of supply chapter? Time of supply chapter में कुछ amendment हुआ था. See, time of supply for reverse charge is also being defined separately. Correct ना? उसमें क्या amendment हुआ था? Fine, no problem. नो प्रॉब्लम. एक मिनट में मैं वो डिस्कस कर लूं आरसीएम वाला प्रोविजंस, जो टाइम ऑफ सप्लाई वाला प्रोविजन जो अमेंड हुआ था. लेट मी ओपन दैट इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल और 2 मिनट पर डिस्कस कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट है इसलिए. जस्ट मैं देखता हूं एंड देन विल कम बैक ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है, पहले देख लेता हूं उसको मैं, एंड इफ इट इज देयर देन जस्ट अलाउ मी 1 more minute. है दिस इज सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज. इनमें ये नया क्लॉज क्या ऐड हुआ? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट इन केस वेयर द इनवॉइस इज टू बी इशूड बाय द रिसिपिएंट. रिसिपिएंट इनवॉइस कब इशू करेगा आरसीएम के केस में? जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है. तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गई? डेट ऑफ पेमेंट. ठीक है, डेट प्लस 60 days इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days, वो वाला बात. इन केस वेयर द इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द सप्लायर. तो इनवॉइस जहां सप्लायर इशू करेगा देन 61 days, और इनवॉइस अगर रिसिपेंट इशू करेगा, रिसिपेंट कब इशू करेगा? रिसिपेंट कब इशू करेगा? जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है देन वो इशू करेगा. और कितने दिन में इशू करेगा? 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द गुड्स और रिसीट ऑफ सर्विसेज. अभी हम बात सर्विसेज की कर रहे हैं, इसीलिए हम 30 days ऑफ सर्विसेज की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो 30 days फ्रॉम रिसीट ऑफ सर्विस. तो सर्विस मेरे पास में रिसीव हो गई, वहां से 30 दिन की काउंटिंग, एंड देन that date of self invoice which is issued by the recipient would be considered for the time of supply. Is that clear? मतलब लिंकिंग आपको समझ में आ गई ना कि 31(3)(f) में अमेंड किया, कॉरस्पॉन्डिंगली अमेंडमेंट 47 कैपिटल एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया, और जैसे ही वहां नया रूल इंट्रोड्यूस किया कॉरस्पॉन्डिंगली अमेंडमेंट कहां पे किया? इन टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द सर्विसेज ऐड किया. अब आप कहेंगे सर गुड्स में क्यों नहीं किया? क्योंकि गुड्स में ऑलरेडी 30 days है. ऑलरेडी 30 days. सी, अगर गुड्स में आता हूं ना, मैं एक बार गुड्स के केस में आता हूं एंड देन विल डिस्कस.
Give me 1 minute. गुड्स की किस में क्यों नहीं किया? यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम, उसमें क्यों नहीं किया? क्योंकि date on which the goods are received is itself a time of supply trigger point. यहाँ पे सेल्फ इनवॉइस कितने दिन में बनता है? 30 दिन में। तो मतलब उसे 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। गुड्स रिसीव होना अपने आप में एक ट्रिगर पॉइंट है फॉर टाइम ऑफ सप्लाई। तो अभी रूल 47 कैपिटल ए को याद करूं तो यहां से 30 दिन, तो इट्स मतलब क्या हुआ, उसको 30 दिन और एक्स्ट्रा मिल गया, विच इज आइडियली नॉट द इंटेंशन। करेक्ट। तो डेट ऑन विच द गुड्स आर रिसीव्ड वहां पे टैक्सेबल हो गया, देयरफॉर तो कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लॉज वहां पे नया ऐड किया ना सर्विस में, वो गुड्स में ऐड नहीं किया। क्लियर? इज दैट फाइन? करेक्ट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड ई वे बिल। सी नोटिफिकेशन fourth proviso has been inserted in Rule 138, Sub Rule 3, with effect from the date to be notified, and the date to be notified has been fixed as 11th Feb 2025. Following person required to generate the EV bill shall submit the details electronically on the common portal in the prescribed form, and upon validation of the same of the details so furnished, unique enrollment number shall be generated and communicated to the said person. An unregistered person making interstate transport of handicraft goods exempted from obtaining compulsory registration and required to generate EV bill irrespective of the value of the consignment, and unregistered person opting to generate an EV bill. Payment of tax. Section 74 capital A is applicable from financial year 24-25 onwards. तो मतलब from 24-25 is being effective. Let's read. Has been incorporated with effect from 1st November 24, so as to provide the determination of tax not paid, short paid, erroneously refunded, or ITC wrongly availed or utilized by any reason pertaining to FY 24-25 onwards. Newly introduced Section 74A provide for the same limitation period for issuing demand notice and ordered in respect of the demand from the financial year 24-25 onward, irrespective whether the charges of the fraud, willful misstatement, suppression are invoked or not, while keeping the higher penalty for the case involving the fraud, willful misstatement, suppression of the fact. Consequently, referring 74A also has been added in the Rule 88B, providing the manner of calculating the interest on delayed payment of tax. In case where the supplies are made during the tax period are declared by the registered person in the return for the said period, and the said return is furnished after the due date in accordance with Section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceeding under Section 73, 74, 74A in respect of said period, the interest on tax payable in respect of such supply shall be calculated on the portion of the tax which is paid by debiting the cash ledger for the period of the delay in filing the said return beyond the due date at such rate being notified in the Section 50 subsection, provided that where any amount has been credited in the ECL as per Section 49 subsection 1 का provisions on or before the due date of the filing of the said return, but it is debited from the said ledger for payment of tax while filing the return after the due date, then said amount shall not be taken into consideration while calculating the interest. क्या मतलब हुआ इसका? Can you tell me in short regarding electronic cash ledger? Can you tell me in short when the interest will not be applicable?
शॉर्ट में बता सकते हैं मुझे कि मतलब यू कैन अनम्यूट ऑल्सो, इफ यू वांट यू कैन अनम्यूट ऑल्सो. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन शॉर्ट? If the amount deposited in cash ledger before due date but 3B has been filed late, then to the extent interest not applicable. बहुत बढ़िया, very nice, very nice. Hmm. Any amount has been credited on or before the due date but is debited from said ledger while filing the said return after the due date, said amount shall not be taken. तो यहां पर तो वो जो आप एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं वो एक्सक्लूड नहीं है ना. इट कुड बी द सप्लाई फॉर अर्लियर टैक्स पीरियड एज वेल. इट कुड बी द सप्लाई फॉर अर्लियर टैक्स पीरियड. कैश लीजन कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहां पर प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम कहां पर है? Supplies made during a tax period are declared in the return for the said period. मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो टोटल वैल्यू पे लगेगा या आईटीसी को एडजस्ट करने के बाद लगेगा. दिस डिपेंड अपॉन हैव यू रिपोर्टेड दैट सप्लाई टाइमली in the same tax period, then in that case it will be on net, otherwise gross. करेक्ट ना? बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, बहुत बढ़िया. देन रिटर्न्स. Due date of GSTR 7 specified in Rule 66. Erstwhile Section 39, Subsection 3 provided that every registered person required to deduct TDS shall furnish the return in GSTR 7 within 10 days after the end of the month. Then 39.3 was substituted, mandate electronic furnishing of the return for each month irrespective of where there is any deduction or not. इसका मतलब क्या हुआ कि उसे कंजिक्यूटिव बना दिया, मतलब सिक्वेंशियल रिटर्न बना दिया. नील रिटर्न भी मैंडेटरी हो गया. Therefore, earlier filing of monthly return in GSTR 7 was linked to the calendar month in which tax was deducted. However, amended 39.3 mandate furnishing of 7 for each month by TDS deductor, irrespective of whether any deduction has been made or not. Just 1 minute. So, every registered person are required to deduct the TDS under Section 51 shall electronically furnish a return for every calendar month provided
that said registered person shall furnish the return for every calendar month whether or not any deduction made during the said period. तो correspondingly rule 66 amend हुआ. Every registered person required to deduct the TDS shall furnish the return in GSTR 7 on or before the 10th day of the month succeeding the calendar month. A reference of 74A in the rule 88D, prescribing the manner dealing with difference in the ITC available in the GSTR 2B and GSTR 3B. Any idea कि रूल 88D में जो डिफरेंस देखते हैं, कितना टाइम लिमिट दिया हुआ है रिसिपिएंट टैक्स पेयर को कि उसे वो डिफरेंस या तो पे करना पड़ेगा, अदरवाइज ही हैज टू एक्सप्लेन, एल्स, मतलब वो टाइम लिमिट दी हुई है. कितनी टाइम लिमिट है? एनीवन यू हैव एनी आइडिया? विद इन 7 days. जस्ट बेटा एक चेंज कर लेना. 88D का जो कम्युनिकेशन होता है उसे इंटीमेशन कहते हैं, नोटिस नहीं कहते. जस्ट वन चेंज, बट अदरवाइज रियली अप्रिशिएटेड कि 7 days आपको याद है. बहुत बढ़िया. तो रूल 88C में भी एक इंटीमेशन जाता है और 88D में भी एक इंटीमेशन जाता है जिसके लिए टाइम लिमिट 7 days दी गई है. ठीक है, तो यह तो कॉरेस्पॉन्डिंग 74A का अमेंडमेंट, मतलब वो तो ठीक है. रिफंड अगेन आई कैन से द 96B. अच्छा, 96B क्या चीज है? टेल मी वन थिंग, कितने टाइम लिमिट में मेरे पास, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज, क्या इन दोनों का रिफंड हम अप्लाई कर सकते हैं बिफोर रियलाइजेशन ऑफ द फॉरेन करेंसी? कैन वी अप्लाई फॉर द रिफंड बिफोर रियलाइजेशन ऑफ द फॉरेन करेंसी, export of the goods and export of service, both, one or none? The answer is you can apply for the export of the goods, no problem, but export of service can be applied only after realization of the foreign currency, that is FIRC और BIRC के बाद में. तो रूल 96 किसके लिए बना? रूल 96 बना था, 96B सिर्फ बना था एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स. अगर रियलाइज नहीं होता तो क्या करना पड़ेगा? इफ इट इज नॉट रियलाइज विद इन द टाइम लिमिट एज पर द, कितना टाइम लिमिट में? विद इन द टाइम लिमिट एज पर दी, हमें अगर एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, अगर मैंने रिफंड ले लिया और अमाउंट रियलाइज नहीं कर पाया एज पर द टाइम लिमिट ऑफ द फेमा, देन व्हाट टू डू? आई नीड टू पे द टैक्स, आई नीड टू पे द रिफंड अमाउंट, आई नीड टू गिव बैक द रिफंड, गिव बैक द रिफंड अलोंग विद इंटरेस्ट. और ये रिफंड वापस मिलेगा या कभी नहीं मिलेगा? ये रिफंड वापस मिलेगा. विल दिस रिफंड बी एंटाइटल्ड टू क्लेम बैक और नॉट? It will be if whenever I will realize, I can file the refund application and it will be realized, the refund would be given back along with interest or no interest? No. Interest वापस नहीं मिलेगा. Absolutely correct. So then only one thing is being added, बस pertaining to financial year 24-25 onwards. तो उन्होंने correspondingly क्या किया? एक just 74A add कर दिया. That's it. So now by this we have completed our discussion, that is amendment also. एक चीज और बताता हूं, उसके बाद में हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी आज हमने पढ़ा है. लेट्स रिवाइज. कुछ और पढ़ना चाहते हैं? यू हैव 20 minutes, यू मे टेल. अगर कुछ और पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो मैं वापस इसी का ही क्विक रिवीजन करवा देता हूं जो आज हमने पढ़ा है. तो आज हमारी लास्ट क्लास है, फिर कभी हम मुलाकात करेंगे एज पर द एलोकेशन जो भी मुझे मिलेगा. रिवीजन ओके, फाइन, ठीक है. चलो रिवीजन करते हैं, स्टार्ट करते हैं. ठीक है.
मैं रिवीजन में नॉट नेसेसरी की अमेंडमेंट पूछूंगा, आई कैन आस्क एनीथिंग, ठीक है, जो भी मेरे माइंड में आएगा। विच ट्रांजेक्शन इज हैविंग द टाइम ऑफ सप्लाई ऑन रिसीट बेसिस इंस्टेड ऑफ अक्रूवल बेसिस? कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कि टैक्सेबल होगा सिर्फ वो जब पैसा मिलता है तब भी, अदरवाइज नहीं? Which transaction is taxable at the time of, नहीं मतलब सिर्फ, ओके, अक्रू हो चुका है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, एडवांस फॉर सर्विस, दैट इज ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा मतलब वो ट्रांजेक्शन जो है टाइम ऑफ सप्लाई की जो बात कर रहा हूं, वो अक्रू हो चुका बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, देन इट सेज इट इज नॉट टैक्सेबल। इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट डिलेड कंसिडरेशन, अगर इंटरेस्ट है फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन तो उसकी टैक्सेबिलिटी कब अराइज होती है? 12 subsection 6 13 subsection 6 says that it will be taxable at the time of receipt, not at the time of accrue. 74A कब से applicable हुआ? When the 74A was made applicable? Financial year 24-25 onwards. कुछ आरसीएम का रिवीजन करते हैं, कुछ आरसीएम का रिवीजन करते हैं, ठीक है, वन और टू क्वेश्चन ऑन द आरसीएम। If Ministry of Railway giving this service to the registered person, will it be taxable under RCM or will it central government? Ministry of Railway is a central government. Providing the service to the registered person, will it be taxable under forward charge or RCM? Very nice, Sanjay. Very nice. Answer is FCM, forward charge. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को एक्सक्लूड किया था आरसीएम में। इट वाज सिंस बिगिनिंग इट वाज देयर बिकॉज इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एक्सक्लूड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट बाद में उसको एक्सक्लूड किया था स्पेसिफिकली कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे विल नॉट बी कवर्ड अंडर आरसीएम, विल नॉट बी कवर्ड अंडर आरसीएम। अगर रिसिपिएंट कंपोजिशन टैक्स पेयर है तो आरसीएम नहीं लगेगा, ये बात तीन जगह है। If the recipient is composition taxable person, then no RCM. It is there in three transactions. Can you tell me? एक transaction तो आज ही पढ़ा था हमने. There are the total three transactions in which if the recipient is composition person, then RCM will not be applicable. First is we have discussed today only. So expecting that answer, and apart from that, there are two more category. Apart from that, there are two more category. Very simple question. Very simple question. The answer is if the transaction is the GTA service, security service,
and renting of commercial property. Absolutely correct. Do you have any idea? I'm not sure whether we have discussed or not. I'm not sure. Ki RCM transaction on which always IGST would be payable. The RCM transaction on which always IGST would be payable. There are two transactions. Remember, or we have discussed, or it is not discussed in the class. Maybe it is not so much important for your examination point of view. No problem. No problem. That is not important also for your examination point of view. Acha, renting of motor vehicle, which is designed to carry the passenger, will be under RCM if recipient is. ये RCM होगा अगर recipient है तो कौन सा recipient है? Renting of the motor vehicle will be taxable under RCM if body corporate. Body corporate. It means companies. ठीक है, ठीक. कौन सा वो ट्रांजेक्शन है अगर सप्लायर कंपनी है तो वो 95 में कवर नहीं होगा. इफ द सप्लायर इज कंपनी देन इट विल नॉट बी कवर्ड इन द 95. वो कौन सा ट्रांजेक्शन था 95 वाला? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एक कैटेगरी ऑफ था, मतलब कैटेगरी ऑफ व्हीकल था. देयर इज कैटेगरी ऑफ व्हीकल बाय ओमनीबस. राइट 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 राइट. सो किस ट्रांजेक्शन पर टैक्स रेट 40% कर दिया जो आज हमने की थी, जो आज हमने अमेंडमेंट में बात की थी, सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूं. किस ट्रांजेक्शन का टैक्स का रेट 40% कर दिया इंस्टेड ऑफ पहले वो 28 हुआ करता था, जिसका बात हमने किया है. लॉटरी. अगर मैं मान लो मैन्युफैक्चरर हूं और आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप फर्दर रिटेलर को सेल करते हैं, तो मैं जो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट देता हूं आपको, इज इट ए कंसिडरेशन, इज इट ए कंसिडरेशन फॉर योर फर्दर सप्लाई? इज इट ए कंसिडरेशन फॉर योर फर्दर सप्लाई? आंसर इज नो, इट इज नॉट ए कंसिडरेशन फॉर फर्दर सप्लाई. फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के कारण रिवर्स करना है रिसिपिएंट को आईटीसी. whether recipient is required to reverse the ITC because of the financial credit note? Sanjay, whether recipient is required to reverse the ITC for the financial credit note? No need to reverse the ITC because supplier ने भी अपनी liability कम नहीं की थी. Absolutely correct. Absolutely correct. Absolutely correct. And then ISD रजिस्टर्ड पर्सन क्या आरसीएम में टैक्स पे कर सकता है? आरसीएम में टैक्स पे कर सकता है आईएसडी रजिस्टर्ड पर्सन?
IST registered person, can he pay the tax under RCM? नो, बिकॉज उसे रेगुलर कैटेगरी का एक और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उस पैन नंबर में. आईएसटी कभी भी आरसीएम नहीं पे कर सकता. तो उसका जो रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन है वो आरसीएम में पे करेगा, फिर फॉरवर्ड करेगा, देन ही विल डिस्ट्रीब्यूट. जीएसटीआर 9 क्या लिमिट है? जब तक मतलब किस लिमिट तक एग्जेम्प्ट किया हुआ है? अगर आपकी टर्नओवर डज नॉट एक्सीड टिल विच अमाउंट इज इट, मतलब इट इज एग्जेम्प्टेड. कि अगर आपकी टर्नओवर डज नॉट एक्सीड दिस मच ऑफ द अमाउंट, then GSTR 9 annual return is not applicable. What is the annual return form number for composition taxpayer? पहले का आंसर था 2 करोड़. इट इज GSTR. कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए एनुअल रिटर्न का नंबर क्या है? 2 करोड़. फॉर्म नंबर क्या है? GSTR 9A. ठीक है. मैक्सिमम टर्नओवर कितनी हो सकती है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन की? 1.5 crore is 75 lakh. And what is the threshold for applicability of the 9C? 9C is applicable if your turnover exceed. 9C is applicable if your WTO exceed, annual turnover exceed 5 करोड़. एब्सोल्युटली करेक्ट. अच्छा, जब जो वाउचर है, अगर वाउचर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज, देन व्हाई इट इज नॉट टैक्सेबल? अगर वाउचर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई, देन व्हाई इट इज नॉट टैक्सेबल? बिकॉज it fall in the definition of money. Because it fall in the definition of money, and is neither money is neither गुड्स नॉट सर्विसेज. ओके. अगर वाउचर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरबीआई, देन विल इट बी टैक्सेबल? अगर वो आरबीआई का रिकॉग्नाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्या वो फिर टैक्सेबल होगा? नहीं. व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? व्हाई इट इज नॉट टैक्सेबल? देन व्हाई इट इज नॉट टैक्सेबल? Because it is covered in the Schedule 3 actionable claim. Because it is covered in the Schedule 3 actionable claim. अगर मैं प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस में ट्रेडिंग करता हूं, लेट से आप आप इश्यूअर हैं और मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर हूं, और फर्दर मैं सेल करता हूं, मतलब आपसे मैं लेता हूं वाउचर्स और फर्दर सेल करता हूं, कुछ मार्जिन ऑब्वियसली कमाऊंगा. विल दिस मार्जिन बी टैक्सेबल? विल दिस मार्जिन बी टैक्सेबल? Answer is no, it is not taxable. And the reason why it is not taxable, बिकॉज अंडरलाइंग आइटम जो है वो खुद शेड्यूल 3 के बाद, मतलब शेड्यूल 3 में कवर्ड है, आईजीएसटी के बाहर है, देयरफॉर उसका ट्रेडिंग विल नॉट बी टैक्सेबल. वाउचर इज एन एक्शनेबल क्लेम. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, नो जीएसटी. तो कब ये जीएसटी लगेगा? ये डिस्ट्रीब्यूशन जीएसटी की टैक्सेबिलिटी में कब आ जाएगा? अगर ये इफ इट इज ऑन नहीं नहीं, वाउचर का मैं परचेज और सेल करता हूं, ये टैक्सेबल कब हो जाएगा? प्राइमा फेसी तो टैक्सेबल नहीं होगा, एग्रीड, बट कब टैक्सेबल हो जाएगा? इट विल बी टैक्सेबल अगर ये कमीशन या फीस बेसिस में सेल किया जाता है, मतलब जहां पर रिलेशन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल नहीं है, जहां पर रिलेशन प्रिंसिपल टू एजेंट है, देन इट विल बी टैक्सेबल. अच्छा, एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं नॉर्मली, हम लोग कहते हैं अनरिडीम्ड वाउचर को हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? अनरिडीम्ड वाउचर इज कॉल्ड एज unredeemed voucher is called as breakage, and breakage would be taxable. Am I right? Will the breakage be taxable in the GST? The answer is no, it is not taxable.
अच्छा, वो हमने एक 16 टू बी के लिए अमेंडमेंट रीड किया था, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, डीम टू बी रिसिट। वहां पे किया था, वो ट्रांजेक्शन कौन सा था, विच कैटेगरी द ट्रांजेक्शन विल बी कंसिडर्ड, कि ये डीम्ड रिसीव हो गया। फिजिकल रिसीट होना जरूरी नहीं है, रिसीट फिजिकली होना जरूरी नहीं है, इट विल बी डीम्ड टू बी रिसीट। व्हाट वाज द कैटेगरी ऑफ दैट ट्रांजेक्शन? कुछ नाम दिया था हमने, हमने नहीं, उस मतलब जो एक्स वर्क, करेक्ट, एक्स वर्क बेसिस पे कोई भी ट्रांजेक्शन जो एक्स वर्क पे है, कोई भी ट्रांजेक्शन जो एक्स वर्क पे है, इट विल बी डीम टू बी रिसीट जब वो गुड्स हैंडओवर किया जाता है टू द ट्रांसपोर्टर, टू द ट्रांसपोर्टर, इट विल बी डीम टू बी रिसीट। अच्छा, व्हाट वाज द अमेंडमेंट इन सेल्फ इनवॉइसिंग? व्हाट वाज द अमेंडमेंट इन सेल्फ इनवॉइसिंग? 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ बात करता है सेल्फ इनवॉइस बनाना है, उसमें क्या अमेंडमेंट हुआ था? जस्ट क्रक्स बता दीजिए, एग्जैक्ट लैंग्वेज जरूरी नहीं, जस्ट क्रक्स बता दीजिए, व्हाट वाज दैट अमेंडमेंट? वेरी नाइस। उन्होंने टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड को ऐड कर दिया, मतलब सेल्फ इनवॉइसिंग इश्यू करने का कोई टाइम लिमिट नहीं था पहले, तो उन्होंने क्रॉस रेफरेंस में ऐड कर दिया विद इन दी टाइम पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा, कितना प्रिस्क्राइब्ड किया है टाइम पीरियड? कितना प्रिस्क्राइब्ड किया है टाइम पीरियड? एनी आइडिया? हाउ मेनी डेज द सेल्फ इनवॉइस नीड टू बी प्रिपेयर्ड? 30 days from the date of receipt of the goods or services. 30 days from the date of the receipt of goods or services. करेक्ट, करेक्ट। तो कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे बता सकते हो आप? कैन यू प्लीज टेल मी कॉरेस्पॉन्डिंगली कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स चेंज हुआ है या टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रिवर्स सर्विसेज चेंज हुआ है? फॉर आरसीएम आई एम टॉकिंग अबाउट, whether time of supply of the goods has been changed or time of supply for services has been changed इस अमेंडमेंट के कारण। ओनली सर्विसेज, ओनली सर्विसेज। अच्छा, अब क्या है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज अंडर आरसीएम? टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज अंडर आरसीएम अब क्या है? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर आरसीएम इन केस ऑफ सर्विसेज? If the invoice is issued by the supplier, then what is the time limit for RCM? What is the time of supply for RCM? अगर इनवॉइस इश्यू करता है सप्लायर, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है इस ट्रांजेक्शन का, आरसीएम वाले का? टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? 60 days। विद इन नहीं है, फॉलोइंग है, ध्यान रखना, बस खाली एक अमेंडमेंट चेंज कर लेना, एब्सोल्युटली करेक्ट 60, फॉलोइंग है तो मतलब क्या हुआ, 61 हो गया। और अगर इनवॉइस इश्यू नहीं करता सप्लायर, मींस इनवॉइस यहां पे रिसिपिएंट इश्यू करता है, वहां पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो? अगर इनवॉइस रिसिपिएंट इश्यू करता है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? 30 days? नो, नो 30 days। डेट ऑफ सेल्फ इनवॉइस, डेट ऑफ सेल्फ इनवॉइस जो हमने बनाई है, डेट ऑफ सेल्फ इनवॉइस। बाकी 74। अच्छा, कौन सा रिटर्न अब पहले सिक्वेंशियल नहीं था, अब सिक्वेंशियल बन गया? विच रिटर्न वाज नॉट सिक्वेंशियल एंड नाउ बिकम सिक्वेंशियल? कौन सा रिटर्न था जो पहले सिक्वेंशियल नहीं हुआ करता था, अब सिक्वेंशियल बन गया? TDS, GSTR 7. And what is the due date of the GSTR 7? What is the due date of the GSTR 7? What is the due date of the GSTR 7? 10th of next month. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, वो कौन से कैटेगरीज हैं जिसपे प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा? किस सिचुएशन में प्रोविजनल रिफंड? दो कैटेगरी की बात की थी, एक कैटेगरी तो गुड्स की बात की थी, कुछ गुड्स का नाम था जिसमें आपको प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा, दूसरा आपका कुछ सिचुएशन है तो प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। कैन यू टेल मी
in which case the provisional refund will not be given. This is the last question. Correct. First is clear in respect of goods, पान मसाला, tobacco, essential oils, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा प्रोविजनली. और दूसरा क्या था? आधार ऑथेंटिकेशन. दूसरा क्या था? आधार ऑथेंटिकेशन. What is the monetary limit for assistant commissioner? Last question है. What is the monetary limit under CGST for the assistant commissioner? What is the money? Okay, okay. What is the monetary limit for assistant commissioner? Above 10 lakh and not exceeding 1 crore. इतनी लिमिट तक का वो ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं, नोटिस इश्यू कर सकते हैं. ठीक, नोटिस एंड पासिंग द ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं. ठीक है. सो सेम पेनल्टीज और सेम स्लैब हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द this part also. So by this we have completed our today class and our course, our statutory updates, everything is being completed with respect to GST. Thank you so much for participation and all the best for your examinations. We will meet in future if any other classes is being allocated to me. Thank you so much. अशोक जी, आज का क्लास कंप्लीट हो गया. Thank you.